नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 27 नवंबर 2022 रविवार है। इस समय भारत में शाम के 6:30 बजे हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। जो दर्शक इस YouTube को वीडियोस को देखते रहते हैं वो इसको पहचानते हैं। ये कैंडल्स डेली कैंडल्स हैं और ये एक लो लैग मूविंग एवरेज लगा हुआ है। ये हमको एक ट्रेंड बता देता है। आप देखिए कितनी बार ये जो यहाँ से चाल शुरू हुई उसके बाद कितनी ही बार बाजार में हल्का करेक्शन आया और करेक्शन के बाद बाजार ऊपर जाता गया। अभी भी यही हुआ था। ये बुल मार्केट्स का एक की प्रवृत्ति होती है कि आप थोड़ा सा करेक्शन कीजिए फिर अपनी चाल में वापस प्रवेश कर जाइए। अब एक प्रकार का हैमर दोजी कुछ भी बोलिए आप शुक्रवार को बना है। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये था कि बृहस्पतिवार को अमेरिकी बाजार बंद थे तो हमारे यहाँ कोई हलचल हुई नहीं, ये भी एक कारण हो सकता है। कुल मिलाकर शुक्रवार को निफ्टी ने हाईएस्ट क्लोज अपना रिकॉर्ड किया जो अपने आप में कीर्तिमान है और कहीं भी हमको रुख में कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था कि यहाँ कुछ है ना एक अंदाज पड़ रहा है। ये छोटे छोटे बांस बन रहे थे, इधर इधर डिप आया, लेकिन फिर जब ये ट्रेडिंग रेंज बनने लगा तो मैंने आपको इंट्राडे चार्ट पे दिखाया था कि अगर इंट्राडे में ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम लॉन्ग हो जाएंगे और वो ब्रेकआउट हो गया था तो हम लगभग एक न्यूनतम स्तरों पर लॉन्ग हुए। अब क्या है, अब मुझे समझ में ये आ रहा है कि यहाँ से यहाँ की अच्छी तेजी आ गई है। अब यहाँ पर हो सकता है कि सोमवार को फिर कोई गैप अप हो, कोई थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो, लेकिन अच्छा मौका तब मिलेगा जब इसी तरह के रेंज पर बाजार आएगा। बाजार रेंज में आ जाए, रेंज के बाद जब ऊपर का ब्रेकआउट होने लगे तभी मैं प्रवेश करूंगा नए ट्रेड के लिए, नहीं तो चुपचाप बैठा हूं, कोई हड़बड़ नहीं है। कुल मिलाकर ट्रेंड अभी भी तेजी का है। प्रवेश करने के मौके आपको खुद ढूंढने चाहिए। मैं चूंकि हम यहाँ पर 600 पॉइंट लगभग जब तक कि गैप अप खुलेगा कुछ होगा, इन लोज से 600 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं तो शायद कोई डिप या कंसोलिडेशन मिले उस समय खरीदना बनता और वो कोई हड़बड़ नहीं है। 2 दिन बाद खरीदेंगे, उसमें क्या है। हर रोज ट्रेड करना आवश्यक भी नहीं है। आशा है आप लोग ये वीडियोस पसंद करते होंगे। कमेंट्स जरूर दीजिएगा। कुछ भी आपकी जिज्ञासा हो लिखते जाइएगा, जहां तक हो सके मैं उसका उत्तर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गुड इवनिंग, आई एम सुदर्शन सुखानी and today is 27th November 2022 Sunday. It's about 6:30 p.m. in the evening in India. This is a chart for the Nifty, the daily chart. Many viewers are familiar with this chart, which I use often. The daily chart consists of candlesticks and a zero lag moving average, which gives me a broad idea of the trend, which is all I need. Now, if you see this up move from these lows to the highs that we have recorded on Friday, you will see any number of deep corrections or shallow corrections, any number. This tells us, this is a message that the market is always giving. In a bull market, markets will pause, go through a consolidation, sometimes go through a correction and then resume their journey upward. The important point here is if you have confidence in the trend, which means confidence in the bull market, then you actually become a buyer on these dips. You are not a short seller. And sometimes, of course, suppose you bought here and then the market fell down and then it took 2 days for you to recover, and that happens quite often. Suppose you buy here and then you wait patiently for 2 days and then that patience is required because you have the confidence that you are buying in a bull market on a dip. So even though prices may temporarily come down, they will eventually go in your way. And of course, if they are actually changing trend, then you have to keep a stop loss. That's the whole idea of swing trading. Buy the dips, keep a stop loss, hope that the trend continues to persist, which is what is happening. Now the Nifty is it's had a lifetime close, the highest ever close. The trend is up. We had some kind of a doji or hammer on Friday. Many reasons. One of them could be that Thursday the markets in US were closed, so we had nothing to do. And maybe we don't question why the markets have done what and why. My trade is that we've seen a very decent rally from the lows on Monday to the highs on Friday,
and I would prefer to wait. And I had showed you an intraday chart when I said that this intraday consolidation is giving a breakout, and on Tuesday there was a buying opportunity which I did, and I shared it with you before the breakout. Now the same story is coming up here. The markets need to pause, either dip or consolidate, for me to take a fresh trade. And that means that sometimes I miss out, because if it doesn't pause, it doesn't consolidate. But as you can see in this chart, it always does that. It's a matter of time only. So, and my next trade should be on the long side, on a pause, on a consolidation, on a breakout, after a consolidation, whatever happens in the market, but not immediately on a gap up. Thank you for watching this video. If you have any questions, please do write. I'll try to answer whatever I can. Jai Hind.